wasting our time, Maheen, we will continue our lecture. So today's topic in math is kilometer and meters. Kilometers and meters are also the unit of length and height. Anything that we want to measure in a shorter distance or a larger distance, we use such amount of quantities. Do you know that? In tomorrow's in previous class we have done with 2 units of the length. Do you remember that ones? Can you tell me? Your mic is off. I can't hear you. Okay, in previous class we have done with these similar to these 2 type of units of height and length. What is? Meters and very good, meters and centimeters. Same as it is here we have today kilometers and meters. Firstly, we will get to know about what is kilometer and meter. Here is a definition of kilometer. Okay, firstly listen, understand, then you have to write. A kilometer is a unit of length used to measure distances. It is a larger unit compared to meter. As we have done in a previous class, जब हमने मीटर और सेंटीमीटर को कंपेयर किया था, हमने क्या कहा था? मीटर बड़ी क्वांटिटी है या सेंटीमीटर बड़ी क्वांटिटी है? मीटर. अगर हम किलोमीटर को मीटर के साथ कंपेयर करेंगे तो किलोमीटर मीटर से बड़ी क्वांटिटी है. तो किलोमीटर हम लोग यूज करते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए? डिस्टेंसेस, लार्जर डिस्टेंसेस. नाउ यू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल. Do you have any idea about that? How many kilometers the distance you cover when you go from your house to your school? No? Okay, we will do that. We will measure that distance. Okay, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. किलोमीटर को हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये अगर हम मीटर के साथ कंपेयर करें, दिस वन इज़ द लार्जर यूनिट. और ये चीज़ आपने याद रखनी है. हमने कल क्या कहा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100. यस, 100. और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000. यस, वेरी गुड, 1000. तो किलोमीटर हम क्यों यूज करते हैं? टू मेजर द लार्जर डिस्टेंस, एंड 1 किलोमीटर कंटेन्स 1000 मीटर्स. गुड. यू हैव एनी क्वेश्चन? अमेरिका से यूएई वो किलोमीटर बन गया. हाँ बिल्कुल, किलोमीटर बन गया. अगर हम शॉर्टर डिस्टेंस की बात करें, अगर हमने ज़्यादा डिस्टेंस की बात करनी है, वो विल डिस्कस अबाउट सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री. अगर हमने छोटे डिस्टेंस की बात करनी तो सिटी के अंदर ही हम कहेंगे फ्रॉम वन स्ट्रीट टू द अनदर स्ट्रीट, फ्रॉम दिस मार्केट टू द अनदर मार्केट, वो हम मीटर की बात करेंगे. ठीक है. एंड मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ कॉमनली यूज फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंसेस. इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट इन अ मैट्रिक सिस्टम. सो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर. यस, 1000 मीटर्स. लेकिन यहाँ पे आपके पास जो चीज़ है वो डिवीजन में हो जाती है. अगर हम इसको पिक्चर में देखें ना, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक पिक्चर प्ले की हुई है जो कि आपको हेल्पफुल होगी समझने में कि आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स को सेंटीमीटर्स में, ये देखें इस तरीके से. एरोस की शेप आपको नज़र आ रही है ना? जस्ट इस एरो. यस, when we have मीटर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मीटर्स और किलोमीटर तक डिवाइड करते हैं. very good. So here is the conversion to convert. If we have to convert our kilometers into meters and meters into kilometers, the diagram you have done as activity in your class. First, 1 kilometer contains how many meters? 1 kilometer contains 1000 meters. Yes, 1000 meters. So if you have to convert any number from kilometers to meters, what we have to do? Like 7 kilometers, so 7000 meters. Yes, we have to multiply the given number with 1000. As here is example 4 kilometers. For example, there is a distance from one city to another, approximately it is 4 kilometer. You have to convert that kilometer into meters. You will multiply the number with 1000. Then the answer will be 4000 meters.
So when we have to convert meters into kilometers, we have to do the division with 1000. So 1 meter contains how many kilometers? 1 by 1000. Yes. One So by 1000. yes. So if we have to convert 2500 meters into kilometers, 2500 meters. yes, 2500 will be divided with 1000. 2500 will be divided with 1000. So do you have any idea about if we have a division with the zeros, we can cancel zeros with each other. As we have a zeros, हमारे पास 2500 में कितने zeros थे? 2 zeros. और 1000 में कितने zeros थे? 3 zeros. हमने 1000 के 2 zeros 25 के 2 zero के साथ कट कर लिए, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया? 25/10. तो जब 25 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.5 किलोमीटर. सो 2500 meters contain how many kilometers? 2.5